बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है। तो वेरिएबल आर द नेम स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी टू स्टोर वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल टू स्टोर डेटा। तो वेरिएबल की हमें प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने परसेंटेज निकालनी है, हमने दो नंबर को प्लस करना है, हमने डिवीजन करनी है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम इन डेटा को वेरिएबल्स में रखते हैं। अब वेरिएबल नेम के लिए कौन से रूल्स है, वो कौन से रूल्स है जिसको इस्तेमाल करके हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये दरअसल C++ के रूल्स हैं। अगर आपने इसमें से किसी एक रूल को वायलेट किया तो कंपाइलर एरर देगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन से रूल्स है, वो कौन से ग्रामेटिकल रूल्स हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर इसमें किसी भी रूल को हमने वायलेट किया तो वो वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर लिए तो कंपाइलर एरर देगा। द सिंबल यूज फॉर अ वेरिएबल इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। ठीक है, एक्स वाई ये जो मैंने प्रीवियस उसमें इस्तेमाल किए वो उसको आइडेंटिफायर का या वेरिएबल नेम कहते हैं। तो अ सेट ऑफ रूल्स यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल, दीज रूल्स आर C++ वेरिएबल नेम कैन बी डिक्लेयर्ड विद स्मॉल लेटर A to Z कैपिटल लेटर 0 to 9 इन अंडरस्कोर। सिर्फ ये अलाउड है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर, स्पेशल सिंबल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट्स। ये याद रखे, वेरिएबल का फर्स्ट लेटर वो या तो अंडरस्कोर होगा या अल्फ़ाबेट हो सकता है। लेटर स्पेशल सिंबल नहीं हो सकते, डिजिट्स नहीं हो सकते, लेटर हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैन नॉट बी स्टार्टेड विद डिजिट 0 to 9। वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करेंगे उसका फर्स्ट जो लेटर है वो लेटर होगा, वो डिजिट्स नहीं हो सकते। स्पेशल करेक्टर सच एज डॉलर, हैश आर नॉट अलाउड। स्पेशल सिंबल हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। C++ कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम्स। C++ keywords are special words that have special meaning and the compiler knows their meaning. So we cannot use keywords as a variable. Blank space cannot be used as a variable. Let's declare some variable. Integer x, y. Yes, these are valid variable because these are start with a letter. Integer 23y, invalid variable because it start with a digits, so we cannot start our variable with a digits. Integer if is a keyword, so we cannot use keyword like if, else, cout, cin as a variable name because keywords are reserved words, have special meaning. Compiler knows their meaning, so we cannot use these keywords for our identifier. Integer my variable. Now look, this is a space. Space are not allowed, so this is invalid variable. Integer my underscore variable. This is a valid because it contains underscore. Underscore, letter, digits are allowed, but every variable must begin with a letter, not with the digits. Integer my variable 20, it is valid because the variable begin with a letter and ends with a digits, so it is allowed. Float is also data type for decimal point number, like float, percentage, it is a valid variable. Float 1, number 2, invalid because it start with a number with the digits. Character is also data type which store character constant. Character
A, A. So it is also a valid variable.